Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video in which we are going to share sample answer of one of the latest cue card. The cue card is right in front of you. Talk about a time when you had to be friendly with someone who you don't like. The cues can be who this person is, why you don't like the person, what exactly happened and why you had to be friendly with this person. I request you to please subscribe this channel right now if you are new here and press the bell button so that you can get the latest updates related to the Ielts exam, and it is the most authentic and the trusted YouTube channel that you are watching right now, Raman Coaching. Well guys, as you know that I always share the idea behind the cue card in the regional language Hindi, then I will move on and share the sample answer with you. Idea इसके लिए बहुत ही realistic है. हमें बस एक ऐसा बंदा ढूंढना जो बिल्कुल भी पसंद ना हो लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी बन जाए कि हमें उसके साथ फ्रेंडली होना पड़े. आप किसी अपने कज़न की बात कीजिए कि उसके साथ आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है लेकिन उसके कुछ पेरेंट या फादर या मदर बीमार हो गए, उस टाइम उसके घर पे जाना पड़ गया, उसकी केयर के लिए आपको भी वहाँ पे रहना पड़ा उस टाइम पर कुछ ऐसा. लेकिन अभी जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही रियलिस्टिक है. हर किसी को लगेगा कि ये तो बहुत ही कंफर्टेबली हम भी बना सकते हैं. आप बात कीजिए अपने एक स्कूल डेज के फ्रेंड की या एक फ्रेंड की जो आपका स्कूल में फ्रेंड है और स्कूल में ही नहीं वो आपका नेबर भी है लेकिन फिर भी आप फ्रेंड नहीं है. कहने का मतलब ये है उसकी पर्सनैलिटी आपसे बिल्कुल अपोजिट है. वो बिल्कुल कोल्ड नेचर का है, किसी को बुलाता नहीं है, किसी से उसकी बनती नहीं है, बहुत ही इंट्रोवर्ट्स है, अकेला बैठा रहता है, रिजर्व नेचर का. आप है बातूनी, आप है टॉकेटिव, आप है आउटगोइंग. तो जिसकी वजह से ना तो आपके मोहल्ले में आपका ग्रुप है जो फ्रेंड्स का वो सेम है ना ही स्कूल में. लेकिन हुआ क्या, एक दिन जब आप स्कूल से आ रहे थे तो आपका एक एक्सीडेंट हो गया, आपकी लेग फ्रैक्चर हो गई. अब नाउ यू आर ऑन द बेड रेस्ट. एक महीने तक आप स्कूल नहीं जा पा रहे थे. तो अब आपके मम्मा ने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो शाम को आपके घर आया करे और आपकी पढ़ने में हेल्प किया करे. तो अब आपकी मजबूरी बन गई क्योंकि वो आपके घर आ रहा था और उल्टा आपको हेल्प करने आ रहा था, जिसकी वजह से आपको उससे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना था और बहुत ही फ्रेंडली मैनर से बिहेव करना था. और वो था कि वो आपको एटीट्यूड दिखा रहा था बट आपकी मजबूरी थी बिकॉज यू वर इन नीड, जिसकी वजह से आप हमेशा स्माइलिंग फेस रखते थे, उसकी बोरिंग कंपनी को एंजॉय करते थे और करते कराते आप ठीक हो गए. और इस टाइम पर आपने रियलाइज़ भी किया कि वो इतना बुरा भी नहीं है. Now let's go ahead and check out this sample answer, and if you're looking for the written version of this cue card you can purchase Speaking Booster as well, and by the end of this video I will show you how you can purchase Speaking Booster. Well, most people prefer to make friends and spend time with those who are like-minded because it's not easy to adjust with opposite personalities. Here I would like to share my experience when I had to be with one of my friends whom I never liked. Actually, Raj is my neighbor as well as my classmate, but still we were not friends. We had nothing in common where he was cold, introvert, and a boring personality. I was quite friendly and fun-loving. That's why we had a different group of friends at school as well as in the locality. Unfortunately, one day coming back from school, I had an accident and my leg got fractured. Now, I was on bed rest for almost 1 month and couldn't attend the school. To avoid the study loss, my mother requested Raj to come at her house every evening to help me in studies. Though he was not willing, but agreed on my mother's request. Now, I had to be very polite and formal to a person with whom I never wanted to be. He used to carry a lot of attitude while teaching me, but I had to tolerate everything because I was in need. To be honest, after a few meetings we got used to each other despite his boring company. Now I can say he is my friend as well, but still not a good friend. Overall, it was a time when I had to be friendly with someone I don't like. First of all, download Ielts coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster.
can buy now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it, you're done.